Hello friends, in this video I am going to discuss about the drug metabolism and why is the need of metabolism and what are the important terms regarding the drug metabolism. So let's start. So basically drug metabolism is also known as a biotransformation of the drug. Means what is the biotransformation? Biochemical alteration means biological and chemical alteration of the drug or xenobiotic is the metabolism process in the body. Basically, what is the xenobiotic? So basically, xenobiotic is made up by two words. First is the xenos and second is the biotic. So xenos means stranger and biotic means biological system. Means stranger for the biological system are the xenobiotic substance, or in other words, we can also say that foreign substance or exogenous substance are the xenobiotic. So what are the exogenous substance? Basically those substances which are not found or present in the body is the exogenous or xenobiotic for the biological system. So basically जो भी ड्रग आपकी बॉडी के अंदर में नहीं बनता है या नहीं होता है वो ड्रग आपकी बॉडी के लिए xenobiotic है. ओके और उस xenobiotic का जो बायोलॉजिकल अल्ट्रेशन और केमिकल अल्ट्रेशन होता है बॉडी के अंदर में वो उस ड्रग के लिए वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है. सो नाउ कम टू द डिफरेंट रिस्पॉन्सेस ऑफ द xenobiotic. बेसिकली xenobiotic आर नॉट फाउंड इन द बॉडी बट इट हैव देयर ओन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस इफ दे आर टेकन बाय द different routes. So basically like food is a xenobiotic for our system. So food produces physiological responses. Similarly drug produces pharmacological responses. Drug or poison produces toxicological responses. Antigens produce immunological response and carcinogen produce carcinogenic responses. Means ये xenobiotic आपकी बॉडी के अंदर में नहीं होता है या नहीं बनता है, लेकिन अगर हम इसको लेते हैं किसी रूट के थ्रू पे, चाहे वो आईएम हो चाहे आपका आईवी हो या ओरल रूट्स हो, तो वो xenobiotic का कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो सकता है. वो डिपेंड करेगा उसके नेचर पे कि वो xenobiotic है क्या, वो ड्रग है या पॉइजन है या फूड है. ओके नाउ कम टू द इंडोजिनस सब्सटेंस. ओके बेसिकली वी नो दैट द सब्सटेंस विच आर नॉट फाउंड इन द बॉडी इज एक्सोजिनस. सो इन अपोजिट द सब्सटेंस which are found or present or synthesized in the body are called endogenous substance. For example, bilirubin, steroid, bile salt and eicosanoids are the endogenous substance, but they have also biological responses similar to the xenobiotic. Now come to the site of metabolism. Basically we know that liver is the major organ for the drug metabolism. Apart from the liver, kidney, lungs, GI and plasma also for the metabolism process. Okay, now come to the important topic or point of the metabolism is the biochemical alteration. Means why is the need of the metabolism? Metabolism की जरूरत क्यों है? तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म की जरूरत है बायोकेमिकल अल्ट्रेशन के लिए. मतलब जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं या फॉरेन पार्टिकल लेते हैं या xenobiotic लेते हैं तो वह आपकी जीआई के मीडिया जीआई से एब्जॉर्ब होता है. एब्जॉर्ब होने के बाद वह लीवर पे पहुंचता है किसके लिए? मेटाबॉलिज्म के लिए. तो मेटाबॉलिज्म होता क्यों है? डिटॉक्सिफिकेशन के लिए. क्योंकि कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल है जो हमारी बॉडी में नहीं होता है वो हमारे लिए अननोन होता है, तो हो सकता है कि वो टॉक्सिक नेचर का हो. तो जो बॉडी है, जो लीवर है, उस ड्रग को उसकी जो बायोलॉजिकल नेचर है और केमिकल नेचर है को चेंज करता है ताकि टॉक्सिसिटी कम हो सके. ओके और बेसिकली इसका जो मेन फंक्शन है वो है एलिमिनेशन. बॉडी चाहता है या लीवर चाहता है कि वो ड्रग मेटाबोलाइट होने के बाद इजीली आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो सके. तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म फेवर द एलिमिनेशन. इसीलिए जो मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन बोथ आर द एलिमिनेशन प्रोसेस. ओके सो मेजर फंक्शन इज द एलिमिनेशन. ओके नाउ कम टू द डिफरेंट पॉइंट्स. Basically, in metabolism, biological inactivation or elimination occurs, or other things like biological activation, pharmacological alteration, or toxicological activation is occurs during the metabolism process. Means
मेटाबॉलिज्म जब कोई भी ड्रग का होता है तो जो मेटाबोलाइट है या तो वो इनएक्टिव होगा या वो बायोलॉजिकल एक्टिव होगा या फिर उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो डिफरेंट होगा या फिर उसका जो मेटाबोलाइट है वो टॉक्सिक होगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं मेटाबॉलिज्म के बाद या मेटाबोलाइट पे। ओके, नाउ डिस्कस द बायोलॉजिकल इनएक्टिवेशन और एलिमिनेशन। इसकी हमने बात कर चुके हैं कि मेटाबॉलिज्म फेवर द एलिमिनेशन बिकॉज वी नो दैट बेसिकली इन दिस प्रोसेस active drug converted into the inactive drug by the different reactions like oxidation, reduction or hydrolysis basically, and lipophilic drug converted into the hydrophilic drug. Basically we know that for the elimination drugs should be in hydrophilic in nature, means hydrophilic drug are easily eliminated or excreted than the lipophilic drug, क्योंकि आपके बॉडी का जो मीडिया है वो एक्वस मीडिया है। जब भी वो ड्रग हम लेते हैं तो बॉडी को निकालने के लिए जरूरी है कि वो लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक हो। अगर हाइड्रोफिलिक ड्रग होगा और वो ब्लड में पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन वो ड्रग आप किसी भी सेल्स पे एब्जॉर्ब नहीं होगा या कम होगा, क्योंकि उनको पता हम पढ़ चुके हैं ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन कि हाइड्रोफिलिक ड्रग आर लेस एब्जॉर्ब देन लिपोफिलिक ड्रग, इसलिए एब्जॉर्ब होगा नहीं, और वो एब्जॉर्ब होगा नहीं तो कहीं ना कहीं वो किडनी तक पहुंचेगा आपका ड्रग हाइड्रोफिलिक ड्रग, और वो किडनी में ब्लड के साथ फिल्टर होकर वो इजिली एलिमिनेट हो सकता है। इसलिए फॉर द एलिमिनेशन ड्रग शुड बी इन हाइड्रोफिलिक फॉर्म और हाईली पोलर ड्रग। ओके, देयरफॉर इन द मेटाबॉलिज्म macrosomal enzyme or non-macrosomal enzymes are enhance the polarity of the drug by adding different polar functional group like NH, SH or OH. Okay, now come to the biological activation. In this process, some inactive drugs are converted into the active drug. For example, aspirin converted into the salicylic acid is the active metabolite of the aspirin, and enalapril converted into the enalaprilate, means enalaprilate is the active metabolite of enalapril. And similarly, some active drugs are also converted into the active metabolite, means some metabolites are also active than parent compound, like codeine to morphine and imipramine to desipramine. Both are the active. Okay, now come to the pharmacological alteration, means both parent and metabolite have different pharmacological action. For example, ipranazide is the parent drug and it is the antidepressant drug, and its metabolite like isoenzyme is a anti-tuberculosis drug. Now come to the toxicological activation. In this process or in this metabolism, the metabolites are the toxic in nature from the parental drug, means for example imdaquinone is the metabolite of paracetamol and is a toxic for the liver, and ecroline is the metabolite of cyclophosphamide and it is a toxic for the bladder, means these drugs are harmful for the body. Now come to the drug metabolism and elimination process. Basically we already discussed that hydrophilic drugs are easily excreted, okay, and some drugs are metabolized by the phase 1 and phase 2 reaction in the liver and thereafter they eliminated. So basically, for example, highly polar drug like streptomycin and neomycin directly excreted or eliminated without any metabolism, means they are excreted in unchanged form because they already are highly polar in nature, so no need to metabolism. Okay, because main function is the enhance the polarity of the drug, so that doesn't require any metabolism process. Now come to the second example. Most of the lipid soluble drug goes to the phase 1 and phase 2 reaction and thereafter they eliminate. Okay, in the phase 1 reaction basically it facilitates the biochemical alteration by adding functional group like OH, NH and SH, and in phase 2 reaction this reaction facilitated the excretion by adding endogenous polar compound.
मीन्स कोई भी ड्रग जो लिपिड सोल्युबल ड्रग है वो फेज 1 रिएक्शन और फेज 2 रिएक्शन जो लिवर में होता है मेटाबॉलिज्म के दौरान, तो उन दोनों रिएक्शन के थ्रू ये एलिमिनेट होते हैं। बेसिकली जो फेज 1 रिएक्शन है उसमें हम उस ड्रग पेरेंट ड्रग पे कुछ फंक्शनल ग्रुप चेंज करते हैं और हम उस पर बेसिकली SH NH OH ग्रुप अटैच करते हैं ताकि इसकी जो पोलैरिटी है वो बढ़ सके। और जो फेज 2 रिएक्शन में है और फेज 1 रिएक्शन में ही बात कर रहे हैं, तो फेज 1 रिएक्शन पे ही उस ड्रग की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो चेंज हो सकती है, या वो एक्टिव से इनएक्टिव हो सकता है या एक्टिव टू इनएक्टिव हो सकता है। ओके। और फेज 2 रिएक्शन जो है बेसिकली दे फैसिलिटेट द एक्सक्रीशन, मीन्स फेज 2 रिएक्शन होने के बाद वो ड्रग का एक्सक्रीट होना इजीली होता है, क्योंकि जो भी आपकी बॉडी के अंदर में जो पोलर कंपाउंड हैं लाइक ग्लूकोनिक एसिड, तो वो अटैच हो जाते हैं उस ग्रुप से, मीन्स NH-OH एसिड ग्रुप से, और वो इजिली एक्सक्रीट हो सकते हैं। और तो बेसिकली फेज 2 जो है डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन है। नाउ कम टू द थर्ड एग्जांपल। इफ ड्रग ऑलरेडी हैविंग द SH NH-OH ग्रुप, so they go to the phase 2 reaction and thereafter they eliminate from the body। मतलब जो ड्रग ऑलरेडी जिसमें NH-OH एसिड ग्रुप हैं तो उनमें ऑलरेडी वो ऐड करने की जरूरत नहीं है जो फेज 1 रिएक्शन में होता है, तो इजिली फेज 2 रिएक्शन के थ्रू एलिमिनेट हो सकते हैं। सो दिस आर द बेसिक फीचर्स या इंपॉर्टेंस ऑफ द मेटाबॉलिज्म, एंड इन माय अपकमिंग क्लास I will discuss in detail about the phase 1 and phase 2 reaction. So thank you.